Dear friends, welcome to Pannag MCQ Hub. आज वीडियो रे आमे एजुकेशन रो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जति कि भी प्रीवियस ईयर रो NEP 2020 की नेकी क्वेश्चन आसीची से सबको को आमे आज गोटे वीडियो रे कवर करबा। ए वीडियो आपण मानक पई इग्नो B.Ed हो CT हो B.Ed हो OTET हो CTET हो KVS हो जति कि भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम अछि सब एग्जाम पई आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट हबो। 100टा क्वेश्चन मुझे टोटाल रखी आपण मैंने वीडियो को आरंभ रू शेष पर्यटन देखो तो 100टा क्वेश्चन आपको केतेटा क्वेश्चन ठीक कर तार आंसर आप कमेंट सेक्शन में जनातु। प्रथम प्रश्न आज पर NEP 2020 10+2 सिस्टम विल रिप्लेस बाय 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 रिप्लेस कराई। ऑप्शन ए ये आपनकर करेक्ट आंसर। NEP 2020 recommend that the medium of instruction up to grade 5 पंचम श्रेणी पर्यंत शिक्षादान मीडियम कौन इंग्लिश रही कि हिंदी रही मातृभाषा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 टू स्टार्ट हम। नेक्स्ट NEP 2020 proposes which degree as minimum qualification for टीचिंग by B.Ed CT DLED MED 4 year integrated B.Ed। ऑप्शन सी ये आपनकर करेक्ट आंसर। FLN Foundational Literacy and Numeracy Mission is called निपुण भारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। NEP 2020 aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by which year 2030 सुधा 100% प्रस्थान। PARAKH proposed in NEP 2020 related to student assessment and evaluation। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आज पर NEP 2020 बैगलेस डे होची क्लास 6 टू 8 आ केतरा बैगलेस डे मन रखिबा 10 बैगलेस डेज। NEP 2020 recommended बोर्ड एग्जाम शुड बी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दवा कि ना डिफिकल्ट हबो ओनली फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हबो इजियर टेस्टिंग बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट in higher education will provide certificate diploma degree of stages। अच्छा NEP 2020 says there will be no hard separation between arts and science vocational academy एठी all of these आपनकर करेक्ट आंसर हे जिवो। किछि अलग आर्ट्स वाला को भाई सहज जेमिति आमे भाबंती आर्ट्स सहज साइंस कष्ट सेमिति किछि नाही किछि रहइबो नाही। NEP 2020 was approved by the cabinet on केत तारिख अप्रूव होला 29 जुलाई 2020 रे 29 जुलाई 2020 रे एटा अप्रूव हेछि। देखो ये सब क्वेश्चन केवीएस PRT 2022 रे आस्तिला। HECI रिप्लेस HECI हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया रिप्लेस करिवो काको एगुडा को UGC AICTE NCT केवीएस PRT 2022 रो क्वेश्चन है। NEP 2020 सजेस्टेड कोडिंग क्लास 6 को PRT एग्जाम रे आस्तिला। एटा CTET रे आस्तिला अगस्त 2023 रे। NEP 2020 recommended students can appear बोर्ड एग्जाम देबे अप टू 2 टाइम्स इन ए ईयर गोटे वर्ष रे से 2 थर बोर्ड एग्जाम दे परिबे। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कवर हुई छे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 रु 8 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ECCE 3 वर्ष रु 8 वर्ष। NEP 2020 प्रपोज टू डिसकंटिन्यू व्हिच एकेडमिक प्रोग्राम। अच्छा डिसकंटिन्यू करबो एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE है स्कूल एजुकेशन 2023 डिवाइडेड स्कूलिंग इनटू हाउ मेनी स्टेजेस 4टा स्टेजेस रे। अच्छा कौन आगु जानिबा। NETF प्रपोज इन NEP 2020 स्टैंड्स फॉर NETF रो पूरा नाम पचारछि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एगुड़ा पढ़ुची एटा UGC नेट रे आस्तिला ए सब क्वेश्चन। NEP 2020 recommended what percent of GDP in education by 6% GDP education by 6%। मो सांगरे क्विकली रिवीजन करि चलंतु। आज पर NEP 2020 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल बी 360 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन SEDG मेंशन इन NEP 2020 स्टैंड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। एटा पढ़थिला हमर CTET जनवरी 2024 रे पढ़ला। एटा पढ़थिला हमर IGNOU B.Ed रे पढ़थिला 2025 मसिया रे 2025 IGNOU B.Ed रे पढ़थिला SEDG रो पुराना सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स।
ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरेशन होची 4 वर्ष इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरेशन है 4 वर्ष NEP 2020 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 2035 सुधा केते 50% रखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 वाज ड्राफ्टेड अंडर व्हिच कमिटी। अच्छा किए तार कस्तूरी रंजन माने पचार तार हेड किए थे NEP 2020 अध्यक्षता कस्तूरी रंजन के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द 3 लैंग्वेज टू बी लर्नड NEP 2020 says हिंदी कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड। इंग्लिश हिंदी किछि नो। नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसी रो पूरा नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल एनेबल कौन एनेबल करे डिजिटल स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स। एबीसी एनेबल्स डिजिटल स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स। NEP 2020 states that अंगनवाड़ी विल बी स्ट्रेंथेन्ड विथ अंगनवाड़ी कौन हम अंगनवाड़ी हम हाई क्वालिटी इंफ्रा एंड ट्रेंड वर्कर अंगनवाड़ी वर्कर मानक भी तालीम दिया सर्टिफिकेट भी दिया बाय 2025 एटलिस्ट 50% लर्नर विल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वोकेशनल को आमर क्लास 6 रु गुरुत्व दिया 2025 सुधा 50% लर्नर विल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर गले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCF FS 2022 रे आउ स्कूल एजुकेशन 2023 रे। NEP 2020 proposed that stand alone HEI will बुझेलानी क्वेश्चन टा NEP 2020 proposes stand alone HEI। अच्छा stand alone HEI convert to multidisciplinary by 2040। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बाल भवन है कौन एटा ऑप्शन बी। NEP 2020 states the children in group 3 ରୁ 8 आमर फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST इज फॉर टीचर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हेन ऑल B.Ed प्रोग्राम मूव टू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज केबे 2030 सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट बट टाइट रेगुलेशन माने लेस बट इफेक्टिव रेगुलेशन। जेंडर इंक्लूजन फंड अंडर NEP 2020 इज फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर महिला झियो आउ ट्रांसजेंडर पे बॉयज मानन पे नो। NEP 2020 says assessment should shift from summative to formative वाला ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। as for NEP 2020 all university will eventually be multidisciplinary। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मो सांगे रिवीजन करि चलंतु आ केतरा आपनकर ठीक होउची मते कमेंट सेक्शन में जणांतु। मेरू एटा भी आसीतिला UGC नेट रे आसीतिला एटा आसीतिला भी हमर IGNOU B.Ed 2025 रे आसीतिला मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एटा मल्टीडिसिप्लिनरी एटा तो ऑप्शन है ठीक अछि हम ऑप्शन है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू स्टैंड्स फॉर। As per NEP 2020 school complex or clusters are recommended for only urban school private management closing small schools एटा रिसोर्स एटी जना पड़ जे आपन मानकर आंसर होची ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सॉरी 1 सेकंड मेरू जाइतिला हमर स्कूल कॉम्प्लेक्स आर रेकमेंडेड फॉर एटा रिसोर्स शेयरिंग। NEP 2020 एम्फासाइज ऑन मदर टंग रे पढ़िबो से पंचम पर्यंत एटलिस्ट ग्रेड 5 अष्टम पर्यंत भी पढ़ा जाई पारिबो। व्हाट विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020 एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जिवो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 aims to achieve universal foundational literacy and numeracy by 2026-27 कौन होउछ FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2026-27 थ्रो निपुण। अच्छा निपुण रो फुल फॉर्म कौन आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणातु निपुण रो फुल फॉर्म कौन। NEP 2020 states that curriculum content will be reduced to core essential
एंड क्रिटिकल थिंकिंग से एबे सबू बुक गुड़ा भी चेंज होची। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 propose that every child will come out of school adopted in at least one skill पाठ हो साठ हो वोकेशनल हो खेल हो किसी भी हो से स्कूल बाहर माने जेकोसी गोटे तार दक्षता हासिल होइतिबा दरकार। एनईपी 2020 recommended teachers to be at the center of कौन फंडामेंटल रिफॉर्म्स। एनईपी 2020 proposes which test for university admission ପାଇଁ CUET common university entrance test। NEP 2020 says HEI will have graded autonomy based on accreditation and ranking। अच्छा ये HEI रा फुल फॉर्म कोन आपण माने जानतु मत तो। क्वेश्चन नंबर 50 NEP 2020 recommended National Research Foundation for funding and research across discipline। नेक्स्ट क्वेश्चन adult education ପାଇଁ कोन ऑप्शन सी न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अंडर एनसीईआरटी एथि ପାଇଁ बहुत स्कीम भी स्कूल ले करा जाउची एडल्ट एजुकेशन में। एनईपी 2020 aims to make India a global knowledge super power by 2040। इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर करा जिवो लक्ष्य रखा है 2040 सुधा। ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। HECI will have 4 verticals which is not one of them। अच्छा तार जो चारटा verticals अछि हमर NTA नुहे NTA होची नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सी होची गोटे सेपरेट बॉडी। GEC under HECI stands for GEC ला जनरल एजुकेशन काउंसिल। ऑप्शन ए ठी आपण मानकर करेक्ट आंसर GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। NEP 2020 recommended that all colleges should gradually become autonomous degree granting। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हमर ECCE will be developed by NCERT early childhood care and education। ECCE will develop by NCERT मन रखिबा। बाल बाटिका means प्री स्कूल जोटा कि प्रथम पूर्व 2 वर्ष अछि। क्लास 1 एडमिशन करिया पूर्व शिशु मानू को विद्यालय रे बाल बाटिका एडमिशन करा होची। गोटे वर्ष बाल बाटिका से पढुचंदी तापर से क्लास 1 को जाउचंदी। इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी इनकरप्टेड इन ऑप्शन सी इंडियन नॉलेज सिस्टम। टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन ऑप्शन बी NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। 4 year UG program अंडर ग्रेजुएट। अच्छा इटा तो बीडी हो हाँ स्टूडेंट्स कैन एंटर PhD विथ नो मास्टर रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। +2 पर आपण माने 4 वर्ष करि परिबे जोटा कि आपण मानकर +3 सहित बीडी। NEP 2020 रिप्लेस रोट लर्निंग को रिप्लेस करा गला एक्सपेरिमेंटल ले एटा। NEP 2020 suggests that student will have increased flexibility in option A subject को बाछिबारे। आर अर्थ होची कोन कोनोसी भी स्ट्रीम रु से माने सब्जेक्ट को जे मन पसंद सब्जेक्ट बाछि परिबे। नेशनल मिशन NEP 2020 propose to set up a national mission on mentoring। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द फर्स्ट 5 year of school will focus प्रथम 5 वर्ष आनंददायी शिक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बुक शुड कंटेन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। NEP 2020 launched to achieve which SDG 4 for quality education एटा 2026 बीड रे आस्तिला IGNOU B.Ed रे। NEP 2020 proposed that teachers will recruit through only interview नुहे through एटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड टीचर एजुकेशन OTET बा CTET बा स्टेट आपनकर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी हो बा CTET हो क्लियर करके आसीबे। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल विल बी असेस ऑन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जिबा आज पर NEP 2020 by 2025 every student will फ्री लैपटॉप स्कॉलरशिप फॉर एंट्री एटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
vocational exposure from class 6 षष्ठ श्रेणी रू vocational शिक्षा school development plan SDP will with involvement of eta option B SMC school managing committee. No, as per NEP 2020 the national higher education qualification framework will be formulated by GEC. Next question, special education zone hoche disadvantaged region and groups option B correct answer. Children with disability will fully participate in regular schooling from option B foundational state to higher education. NEP 2020 the use of which divyang student divyang option B correct answer. NEP 2020 says that a teacher will given continuous opportunity for option B self improvement and innovation. निष्ठा होची टीचर मानक पई आ स्कूल एड पई निष्ठा ट्रेनिंग आर गोटे आप अच्छी स्वतंत्र निष्ठा आप अपन ट्रेनिंग फेज बाय फेज नहीं पारे. नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग होची रिटायर्ड टीचर नुहे नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. NEP 2020 says that public expenditure on education will be increased to public expenditure in education by 6% GDP रखा है 6%. No hard separation between curricular and extracurricular and vocational option B. NEP 2020 proposed that HEI will focus on research and training. NEP 2020 says that the medium of instruction in HEI will be NEP 2020 proposed to end the system of affiliating colleges. Breakfast in addition to midday meal अच्छा breakfast दिया जीवो स्कूल ले. Health checkup all students. Next question जीवा quickly division करी जीवा. As per NEP 2020 the new curricular structure will have semester system. NEP 2020 recommended setting up model public school कोटी every cluster रे. लोक विद्या होची vocational education. Subject choices in secondary stage will be flexible. NEP 2020 proposed that Olympiad and competition will be all subject. What all subject? आगुरु मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश एमि थिला ओलंपियाड एबे ताकू कंपटीशन कराबो ओलंपियाड ता सब सब्जेक्ट पई. NRF National Research Foundation establishment goal to option B internationalization of education will include mutual world university facilitation. Internationalization of education will include eta करले. Next question को जिबा question number 93 को. NEP 2020 is the dash national policy third. प्रथम आस्तिला 1968 तापर 1986 एबे 2020 ए 1986 को रिव्यू करिया पई 1992 रे आसिला कोन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रे प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसिला POA. अच्छा ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन नो अध्यक्ष किए थिले आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे. POA 1992 रो अध्यक्ष किए थिले सेटा आपण माने कमेंट सेक्शन में जणाइबे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. NEP 2020 says that Anganwadi workers will be trained as per सेमानंकु ट्रेनिंग दिया जिवो सर्टिफिकेट भी दिया जिवो तांकु डिग्री गोटे वर्षिया कोर्स भी सेमाने करिवे. नेक्स्ट क्वेश्चन
NEP 2020 proposed to establish a gender inclusion fund gender inclusion fund for special education zone. Option A correct answer. Common repeated question एगुड़ा सब. NEP 2020 says that education is a education टा कौन education हूँ ଗୋଟେ सेवा public service. Education is a public service. अच्छा गला. Highest priority is to achieve universal FLN by which year? 2026 ଆଉ 27 सुधा achieve कराबो FLN foundational literacy and numeracy. Question number 98. NEP 2020 says that PhD eligibility will be PhD हला 4 year integrated B.Ed. आपण मानकर से 4 वर्षिया कर देला पर आपण माने PhD ପାଇଁ एलिजिबल होई परिबे. अच्छा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सॉरी आउ देखो अछि peer tutoring होची voluntary activity. peer tutoring voluntary activity. हमर आज लास्ट क्वेश्चन NEP 2020 फुल इम्प्लीमेंटेशन टारगेट केबे सुधा 2040 सुधा. अच्छा तो सांग माने वीडियो आज पई एतिकी वीडियो टिके स्पीड करिवार कारण थिला हमर क्वेश्चन गुडा आमे क्विकली रिवीजन करिबा. क्वेश्चन देखि कि आमे आंसर करिबा. NEP 2020 होची गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. NEP 2020 गोटे टीचर पई जतिकी दरकार टीचर एग्जाम प्रिपेयर करथुवा स्टूडेंट मानको पई भी सेतिकी दरकार. तेणु आपण माने ए वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु 100टा क्वेश्चन को रिवाइज करंतु. बस ए 100टा क्वेश्चन को आपण मुखस्थ करंतु रिवाइज करंतु. या भितरे आपण मानकर सब क्वेश्चन अछि जतिकी भी आपण मानको पई जरूरी सेतिकी क्वेश्चन एटी कवर करा जायछि. क्विकली वीडियो को रिवीजन करंतु. थर पर दि थर वीडियो को देखंतु. भलो लागिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू. जय हिंद. मिलिबा नेक्स्ट वीडियो.